हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल टेक लवर्स में। तो आज हम लोग बात करेंगे रेस्जेस्टे के बारे में, सेक्शन 6 के बारे में। व्हाट इज अ रेस्जेस्टे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट एंड हाउ इट्स गोइंग टू बी यूज्ड इन इंडियन एविडेंस एक्ट। सो लेट्स स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं। सो रेस्जेस्टे, लाइक सबसे पहले बात कर लेते हैं मीनिंग ऑफ द रेस्जेस्टे। इट इज एन Latin phrase which means things said and done in a cause of same transaction. ओके, सेम ट्रांजेक्शन के बारे में बात करते हैं रेजिस्ट्री में। रेजिस्ट्री को बोलते हैं लोग, सेम ट्रांजेक्शन भी होती है। रेजिस्ट्री में बी डिफाइंड इन दो सर्कमस्टेंसेस इन विच फैक्ट और ट्रांजेक्शन इन द continuity in the main transaction. It's include which can be considered to be fairly with the main event. लाइक हम लोग समझ सकते हैं कि रेजिस्ट्री क्या होता है कि एक ट्रांजेक्शन है, लाइक उस ट्रांजेक्शन की सब ट्रांजेक्शन होगी, तो जो उसके साथ में ट्रांजेक्शन हो रही है वो सब रेजिस्ट्री एंड दीज आर रिलेवेंट फैक्ट्स. Okay, so these essence of the doctrine of is that a fact which through not in issue so connected with the fact as to past of the same transaction become the relevancy by itself. The test of admissibility as evidence as a part of the Resgeste is whatever the act, declaration, explanation, or is so interwoven or connected with the principal fact as to be regard of the same transaction. Okay, and the principle behind the doctrine of Resgeste code to take into the account in all essential detail of the transaction. इट सर्व द पर्पज ऑफ कंप्लीटिंग द मिसिंग लिंक. सो इसका जो पर्पज होता है रेजिस्ट्री का, कि जो मिसिंग लिंक है उनको कंप्लीट करना. लाइक एक कंडीशन है, हम लोग लिंक करते हैं, लाइक द चेन ऑफ इवेंट हम लोग बनाते हैं रेजिस्ट्री के थ्रू, सो वी कैन प्रूव द फैक्ट लाइक. ओके, सो इसमें एक केस तो भी है जो आई जस्ट वांट टू लेट यू नो. छोटका वर्सेस स्टेट 1958. So Section 6 of Indian Evidence Act embody the rule of admission the evidence related to what is commonly known as Resgeste, and it is an act or declaration accompanying or explaining the transaction or fact in issue as treated as a part of Resgeste or admission as a evidence. Okay, and the act may occur at the same time, same place, or different time at different place. However, they must be connected together by the proximity of the time, proximity of the place, and continuity of the action and continuity of the purpose. ओके, सो हम लोग समझ सकते हैं कि रेजिस्ट्री क्या है कि आपको सेम टाइम सेम प्लेस पे भी हो सकता है, डिफरेंट टाइम डिफरेंट प्लेस पे भी हो सकता है, बट आपका उनके बीच में कनेक्शन होगा. प्रोक्सीमिटी ऑफ द टाइम या तो कनेक्शन होगा, फिर प्रोक्सीमिटी ऑफ प्लेस होगा, फिर कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन होगा, या फिर आपका कंटिन्यूटी ऑफ द पर्पस होगा. एक कम्युनिटी का एक पर्पस है, उसके लिए वो काम कर रहे हैं, और तो वहाँ पे फिर टाइम देखा जाएगा. तो दैट कॉल द सेम ट्रांजेक्शन. साइकोलॉजिकल फैक्ट एंड अकम्पनिंग. सो फिजिकल फैक्ट क्या है? द वर्ड स्पोकन बाय द पर्सन डूइंग द एक्ट बाय द पर्सन होम दे वर डन और बाय स्टैंडर्ड आर रिलेवेंट एज अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन. Okay, and provided that are the contemporaneous with the transaction and there is not interval, so as given time and opportunity for fabrication. इसमें एक केस लो और मैं आप लोगों को कोट करना चाहूँगा, आर वर्सेस फोस्टर. If deceased has been killed by a speedy truck, the witness had not seen the incident, but the speedy truck and the deceased stated to him what had happened with him in the incident. Court held that the statement of the deceased admissible as a register. That means क्या है कि एक जो आदमी है मर रहा है, मतलब एक ट्रक, स्पीडी ट्रक ने उसकी हत्या कर दी, एंड द विटनेस ने जो इंसिडेंट्स नहीं देखा, बस उसने ट्रक को जाते हुए देखा, एंड देन उसने जो डिसीज है उसने उसको अपना लास्ट स्टेटमेंट दिया कि ट्रक ने उसको मारा है, एंड देन ही डाई. एंड आफ्टर दैट लाइक जो उसका स्टेटमेंट होगा, और उसने फिर ट्रक को आगे जाते हुए देखा, तो उसका जो स्टेटमेंट होगा वो एडमिसिबल होगा बिकॉज ही इज लिंकिंग द इवेंट, ही इज लिंकिंग द इंसिडेंट्स. सो वो एडमिसिबल है होगा एज अ रेजिस्ट्री.
So section 6 की बात करते हैं हम स्पेशली. Section 6 is specifically provide that the fact forming part of the same transaction may be occur at the same time, same place, or different time at a different place. And the act or transaction may be complete in a moment of the time, or if there is a connecting circumstances, it may extend to period of a day, week, or even month. Okay, so transaction, it's not mean like at the same time this transaction is going to be complete. Maybe somebody is doing something for a specific purpose and it's taking time. ओके, लाइक जैसे लोग काम करते हैं, मतलब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं, so they have the purpose, they have the same ideology, and they are like war against the people. So वो टाइम लेके काम कर रहे हैं. लाइक आपका एक अभी उन्होंने कोई किसी घटना को अंजाम दिया, फिर 1 साल बाद, बट द पर्पस इज द सेम, द आइडियोलॉजी इज नॉट गोइंग टू बी डाई. So this is a mean, and it means there is a no limitation which can be imposed at the territorial boundaries with which transaction must occur, and it may be cover the breach of the country. So this is all about the Resgeste. If you like the video, please like, comment, share, and subscribe the channel. Thank you for watching.